वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में दिया है Z1 एंड Z2 आर एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन एंड Z3 इज एडजेसेंट टू Z2। ऐसा है तो व्हाट इज Z3 इन टर्म्स ऑफ Z1 एंड Z2? ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस टेक ए रेगुलर octagon. ठीक है, so if you take a regular octagon, it has 8 sides and दिया है कि Z1 is one of the vertex and Z2 is an adjacent vertex and Z3 is a vertex which is adjacent to Z2. ठीक है, these are 3 vertices. आपको Z1, Z2, Z3 ऐसा भी हो सकते हैं, something like clockwise direction, और Z1, Z2, Z3 can also be like this. So if you take some part of the regular octagon, Z1, Z2, Z3 either clockwise direction में हो सकते हैं या anti-clockwise direction में हो सकते हैं। ठीक है, these are 2 options. Now, how can you find Z3 in terms of Z1 and Z2? It's simple है, so we can use the concept of rotation. So आप देख सकते हैं, because this is a regular octagon, this side will be same as this side. So आपको Z2, Z1 ray को if I can rotate it through an angle theta which is equal to the internal angle of a regular octagon, आपको Z2, Z3 ray मिल जाएगा। Otherwise, if these Z1, Z2, Z3 are in counterclockwise direction, आप same Z2, Z1 को you can rotate it through an same angle theta in the clockwise direction to get Z2, Z3. Z1, Z2 को थीटा एंगल क्लॉकवाइज में घुमाया तो आपको Z2, Z3 आ सकते हैं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। Z2, Z1 को कैन रोटेट इट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑल्सो टू गेट Z2, Z3। सही, सो दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो लेट अस अप्लाई दिस प्रिंसिपल यूजिंग रोटेशन कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट आपको ये थीटा कितना है वो फाइंड करना पड़ेगा। रेगुलर ऑक्टागन में व्हाट इज द इंटीरियर एंगल? सो आई होप यू नो द फॉर्मूला फॉर दिस। सो फर्स्ट, अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो सो रेगुलर ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल विल बी 360 divided by 8, that is equal to 45 degrees. So internal angle will be equal to 180 degrees minus 45 degrees, that is equal to 135 degrees. ठीक है, 135 degrees. So this is the internal angle of a regular octagon. So आप रोटेशन थ्योरम अप्लाई करेंगे। Z2, Z1 is nothing but Z1 minus Z2. This vector, when it is rotated through 135 degrees, either in the clockwise direction or in the anti-clockwise direction, that is e power plus or minus I 3 pi by 4. So plus 135 degrees घुमाया तो e power I plus 3 pi by 4 से मल्टीप्लाई करना है। 135 degrees clockwise में घुमाना है तो minus I 3 pi by 4 से मल्टीप्लाई करना है। So in either of the case, you can get the vector or the ray Z2, Z3, that is nothing but Z3 minus Z2. So this implies आपको Z3 चाहिए। Z3 के लिए आप Z3 को एक तरफ रखिए, बाकी सब दूसरी तरफ लेके आइए। Z1 minus Z2 into what is e power plus or minus I 3 pi by 4, that is cos 3 pi by 4 plus or minus I sin 3 pi by 4. Cos 3 pi by 4 is minus 1 by root 2 plus or minus I times 1 by root 2 is equal to Z3 minus Z2. So this implies Z3 is equal to, इस Z2 को मैं आगे लेके आ सकता हूं, Z2 plus 1 by root 2 times Z1 minus Z2 into minus 1 plus or minus I. -1 plus or minus I. अगर चाहिए तो आप
एक माइनस को कॉमन ले सकते हैं if you want to keep it as +1. That is equal to Z2 plus 1 by root 2 times Z2 minus Z1 times 1 plus or minus a. So this will be the final answer for Z2. Thank you.